this entire set of process, when it is done, it actually takes months and years. हम लोग खाली थियोरिटिकली पढ़ रहे कि ऐसा ऐसा होता है, बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट करना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है. एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लैब्स विथ sterile environments, sanitation, ठीक है, many things are required. तो ये and moreover in the entire country बहुत कम ही सेटअप्स ऐसे हैं जहां पे ये प्रोसेस हो पाती है. It is not possible to do it in ordinary basis. Fine. And करने के लिए भी आपको बहुत सारे tools चाहिए and skills भी चाहिए. It's not that कि only tools से हो जाएगा. Skills are also required. ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग को वो सब कुछ नहीं करना है यहाँ पे. You will simply have to understand the thing, remember the thing and answer questions accordingly. ठीक है, तो आपका काम जो है वो सिंपल है. ठीक है ना बच्चा. देखो अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स ये कैसे हो रहा है. देखो जरा. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स lead to inclusion and multiplication of undesirable genes and desirable genes both. ठीक है, जैसे हमने बोला कि एक पर्टिकुलर ट्रेट है जोटा हमारा दरकार है, वो वहां पे ब्लू कलर बोला था या XYZ किसी भी नहीं पड़ी. Now when that same particular plant reproduces or animal reproduces, the next generation तापर जो generation है ऐसी वो, is there a guarantee कि तारो in the next generation only what I need but desire will be there? No. Rather, it will be a mixture of desirable as well as undesirable components. दुईटी प्रकार जीन मिसिकी रहिले, desirable मध्य रहिला, undesirable मध्य रहिला. Understood? So, आमर benefit केमिति होला? Sometimes it may happen कि undesirable is stronger but more dominant. तो सी express है जी वो, desired express होबो नहीं. Sometimes desired can be recessive ना, तो the recessive trait की desired रहेगा. तो we know that यदि heterozygous condition के ब्यास होची तो dominant express हो जाएगा, recessive होबो नहीं. यदि recessive न होला तो आमर benefit किछि होला नहीं. Why? Because a trait express ही होला नहीं. Got the point? तो बहुत सारी difficulties होते हैं. सही डिजाइड कुआ गला. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जब करा जाउची तो आमर भलो डिजायरेबल जीन्स को सांगेरे अनडिजायरेबल जीन्स मध्यम एंटर करी जाउचंती कोटुगी फ्रॉम दिस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अंडरस्टूड? दैट इज बिकॉज ट्रेडिशनल टेक्निक फॉलो होची जोठी हमें सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करछे. इधर गैमेट्स फॉर्मेशन हबो ये डिवीजन कैसे हो जाएगा. से ये डिप्लॉयड है, से दिस इज द डिप्लॉयड. जस्ट अ सेकंड. से दिस इज द डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है. इधर गैमेट फॉर्मेशन हैला तो हैप्लॉयड हो गया. तामाने कौन फॉर एग्जांपल इफ द कॉम्बिनेशन इज दिस, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, और ऐसा, तो आपको इसके पास क्या आ गया, आधा सेट आ जाएगा. इसके पास आधा सेट आ गया, इसके पास आधा सेट आ जाएगा. a+x और a+y. ठीक है ना. a+x और a+y ऐसा, और a+x and a+x. Now when the hybridization was done, say इसको hybridize किए हो आप या इससे hybridize किया हो, any one of the gametes will be hybridized. ठीक है ना. Now तो से जो hybridization डी होबो सेतेरे ये जो आपकी ऑटोसोम्स है या X and Y क्रोमोसोम्स है एमानकर सबु जाक जीन्स तो आमर दरकार नहीं ना.
तो आंक भितर कोटी गोटे जीन टे अछि जोटा कि डिजायरेबल जीन हमर माने जीन ऑफ इंटरेस्ट बट खाली जीन ऑफ इंटरेस्ट जीवो कि नो पूरा गैमेट जाएगा भाई यदि पूरा गैमेट जीवो तो एंटायर हैप्लॉइड सेट ऑफ नो द एंटायर जीनोम विल गो अंडरस्टूड तो सेथेरे आमर से डिजायरेबल जीन टी एक्सप्रेस होबो कि ना वी डोंट नो दैट अंडरस्टूड so that's why ये चीज यहाँ पे बोला गया ठीक है नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स रे यही प्रॉब्लम टी होता है नॉर्मली देयरफॉर आमे पूरा सिलेक्टिव वे की प्रिसाइज वे रे ए प्रोसेस टी करबा कत ठीक देखो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग only desirable genes are introduced तो ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ କଲେ ତ ଆମେ unnecessarily ସବୁ ଯାକ ଜିନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ only those genes ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁଜଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କି ଦରକାର ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସେସ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ उनको ही खाली ट्रांसफर करेंगे because that is our objective we don't need to look into all the others clear so the chances of contamination বা chances of rejection बहुत कम हो जाएगा ठीक है off now look into this ये सेकेंड वाली स्टेप में आप क्या कर रहे हैं you are introducing that extracted gene or DNA into the desirable host ठीक है तो जितना हमें जिनसटा आनिले कोनोसी हमर जोटा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं कि आसले से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें यूज करिबा ठीक है now in order to use that particular thing आपको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा you have to transfer it here ठीक है इसमें host में why because when the host will be taking up that particular alien DNA it will utilize it ठीक है प्रथमे incorporate करिवो निज DNA संगे मिसेई दबो fine after doing it it will start to produce certain substances by secreting certain enzymes and certain changes will happen in the phenotype एई जो चेंज गुडी को हबो that we will have to see कि से चेंज गुडी को आमो हिसाब रे होउची आमो रिक्वायरमेंट रे होउची कि हो नाही अरे समझ में आई बात दिस इज द बेसिक थिंग ओके so what we are doing introduction of the identified DNA into the host a vector DNA such as plasmid is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism ठीक है so basically what are we doing here we have taken that particular gene of interest from that DNA then we have added that particular gene of interest to a vector जैसे यहां देखो ये plasmid what is mentioned here this plasmid which is mentioned here ये आपकी वेक्टर है this plasmid is a vector ठीक है and that plasmid contains the alien DNA और सिंपली बोले वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है that particular plasmid contains the gene of interest ठीक है now what are we doing by the use of this particular plasmid we are transferring the gene of interest or alien DNA into this particular host यहाँ पे host कौन है रे भाई ये बैक्टीरियल फॉर्म में से ये बैक्टीरिया मान लो ई कोलाई है एशेरेशिया कोलाई हम पेटर थाए ई कोलाई तो ई कोलाई भितरे आमे ई प्लाज्मिड टी छाड़ देले ठीक है now that particular plasmid which is inside the bacteria that is E. coli
तारो से जो पर्टिकुलर एलियन डीएनए से नहीं कैसी से ए बैक्टीरिया को दान रे दे दो. Now the bacterial DNA or the bacterial genome say particular alien DNA टिको नहीं जीवो and निजरो DNA संगरे merge कर दो. As a result of which ଆମର desired ଜିନିଷ ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା, that is alien DNA or the gene of interest, now that has been transferred from one particular source, that is donor, to the host by recipient via this particular plasmid. तो plasmid टी कौन है ये तो ट्रांसफर करूँ एक टू सेट की वेक्टर है गला बुझ पा लो. So this is how the vectors are used to transfer. आर methods अच्छी केमिति यूज करा जाए, केमिति vectors तैयारी करा जाए recombinants, that we'll see later in the methods and processes. एठी केवल हमें principles संगे डील करूँ कि रूल्स कौन हो, स्टेप्स कौन हो. ठीक है, देखो तो पहला चीज आपने आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट किया, दूसरे में आपने ट्रांसफर किया, इंट्रोडक्शन करके होस्ट में डाल दिया. ठीक, तो हमारा दुईटी काम वाइटी है गला. फर्स्ट टू स्टेप्स आर डन. द फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड एक्सट्रैक्शन. द सेकंड इज ट्रांसफर इनटू द होस्ट but no organism or cell. ठीक है, then ये सबसे डिफिकल्ट वाला काम है. थोड़े ट्रांसफर है वाला into that desired host, तो से होस्ट का सही पर्टिकुलर डीएनए to use करिबो, and for that you need to provide a proper environment. केमिति एठी कोन हबो ना जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तम दबो सेटा पैथोजेन फ्री थिबो दरकार. कोनोसी प्रकार रो केमिकल्स बा बायोलॉजिकल एंटिटीज सेठी रहिबे नाही. the environment the what we can say the place where this is being done वो completely zero contaminant होना चाहिए. कोनोसी प्रकार इंटरफेरेंस से होस्ट प्रति will become difficult, and then the entire process experiment will fail. No results. ठीक है, बुझिएला. अच्छा, ता छोड़ा, besides that, proper medium, proper temperature, pH, everything has to be maintained. तो सही जिनसे उड़ियो कॉला परे, you'll see that the host cell or host organism is now able to replicate that particular DNA and manufacture products. देखो, a piece of alien DNA has एक मिनट, there's a thing mentioned as no, ये no काट दो. The piece of alien DNA has the sequence called origin of replication. ठीक है, that particular plasmid जो आपने देखा उसमें एक region है, there's a place inside it जिसको आप origin of replication बोलते हैं. जिधर वेक्टर्स को जीवाना जाता है, पूरा डिटेल्स देखिए, एक जगह देखियो थी वो, we call it ORI, that is origin of replication. C, in case of plasmids, normally we say ORI C. ठीक है, how needed for starting replication. So every particular plasmid here would be having an ORI, origin of replication. So because of that origin of replication, it will start to multiply. ठीक है, fine, and by this multiplication it will develop several organisms. ठीक है, hence alien DNA is integrated into the recipient genome. ठीक है, it multiplies and inherits along with the host DNA. कौन बुझिला?
once they start to grow and mature and then reproduce, then what will happen? They will be able to use that alien DNA, first of all, to synthesize the desired products. Secondly, that particular alien DNA will also be copied from one generation to the next generation. बुझ पा लो? So therefore, तीन important parts हमने देखा. One was the identification of the gene of interest and extracting it. Secondly, transfer of that particular gene of interest into a suitable host. And thirdly, maintenance of a sterile or non-contaminated environment in order to grow that particular alien DNA. ठीक है? Understood? So, यही तीनों are basic steps involved in genetically modifying any organism or manufacturing of GMOs. GMO कौन है? Genetically modified organism. GMO is genetically modified organism. GMO मन रखियो रे बाबू. ठीक है? Fine. आई होप यहां तक आपका थॉरोली क्लियर हो गया होगा. ठीक है? फाइन. ना इसे हम लोग विल स्टार्ट. यहां पे वन सिंपल थिंग. Till here we have now looked at all the principles and steps involved. ठीक है? Method which we use to actually perform this recombinant DNA technology or use this rDNA technology. बुझ पा लो? तो यहां तक आप लोगों ने थॉरो कर लिया होगा. ठीक है? तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया. ठीक है? लाइक इसमें आप एक काम कीजिए. टेक अ लुक एट योर रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक. एनसीईआरटी होगी आपके पास. यहाँ पे एक छोटा सा पॉज करते हैं. Hardly a 5 to 10 seconds, 15 seconds, or say 30 seconds or 1 minute. Fine. 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. आपकी किताबों में एनसीईआरटी ने जहां अच्छी उसे एक बार जस्ट पलट के देख लो. ठीक है? Those who have to go to washroom etc. they can use it also. Take a fresh break. ठीक है? But 1 मिनट का only. And then we'll continue from here. समझ में आई बात? यहां तक हमारा पहला पड़ाव खत्म हो गया. तो यहां हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया. ठीक है? बुझेला? ओके. 1 minute is done. Fine. Okay. Now यहां पे here this is another very interesting aspect. ठीक है? ये किससे डील करता है? In the experiment which was done in order to give this breakthrough of the first recombinant. मतलब दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट एक्सपेरिमेंटली जो बना था. It is the introduction to that. Once this was done successfully, उसके बाद से after that this recombinant technology became a big hit. ठीक है? So that ना अगर हम इस लेवल पे ये कर पा रहे तो obviously we can make its applications successful in even higher setups. ठीक है ना? सही इंसर्टा को देखा गया. Now look into it. The process of joining
and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology. By simply koya gole RDNA technology. RDNA technology. Recombinant DNA मतलब RDNA, ठीक है. तो क्या किया इसमें, हमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बात छितले, see gene of interest, the entire process of joining the gene of interest, ठीक है, from one organism to a suitable host organism, ठीक है, and after that produce different genetic combinations. ये जो जिनसटा हैला, this is the mechanism of formation of RDNA by recombinant DNA. ठीक है, देखो. The first recombinant DNA or RDNA was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer. Stanley Cohen and Herbert Boyer. पहला DNA recombinant वाला was produced by Cohen and Boyer. Stanley Cohen and Herbert Boyer. ठीक है? Now it was long time back, that is 1970s. ठीक है? They isolated an antibiotic resistance gene. They identified an antibiotic resistance gene, ठीक है, from a plasmid of Salmonella typhimurium और टाइफी. ये आप देख रहे हो सामने, ये साल्मोनेला है. साल्मोनेला नॉर्मली कौन करता है? यस, अरे कॉमन डिजीज है इस समय पे, इन दिस रेनी सीजन. ये सबसे कॉमन प्रकार की प्रॉब्लम है, दैट इज टाइफॉइड. Salmonella typhimurium causes typhoid. ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है ये कि सही पर्टिकुलर Salmonella typhimurium रो गोटे सैंपल रु से माने कौन आइसोलेट कले ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करो. कहीं टाइफॉइड है माने तुम डॉक्टर को बोलो तो डॉक्टर्स ने आपको क्या दिया? यस, एंटीबायोटिक्स देंगे. तो प्रॉब्लम है इसकी ए टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला. मान लो ये रेजिस्टेंट हो गया, मतलब आपको टाइफॉइड हुआ, सपोज मान लो आप और गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, आपने खाया, लेकिन टाइफॉइड अच्छा नहीं हो रहा है. दैट इंप्लाइज दैट योर टाइफॉइड हैज बिकम रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक. फिर वापस जाएंगे आप उनके पास, and then the doctor will conduct a few more tests and then provide you with another set of antibiotics or a combination of antibiotics. बुझेला? तो सही क्वेश्चन मार्क आसला कि सबू हमरो साल्मोनेला माने तो एकटा बोले अनुमति. यस, मतलब जॉन को टाइफॉइड है, सही मेडिसिन खाएला, ठीक है गला, आप खाए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? Yes, that means that particular salmonella has obviously developed some kind of resistance, because of which it is no longer getting affected by the antibiotic. Which part of that? So what is that property inside them which is preventing them from doing so? वो देखना है हम. ठीक है, तो सही कंक्लूजन थी हर्बर्ट बॉयर एंड द स्टैनली कोहेन टीम, दे गिव that particular gene of interest जोटा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, that was obtained from the salmonella. ठीक, then it was linked with a plasmid. It was linked with a plasmid, ठीक है, and that particular plasmid linked with the plasmid, and that particular plasmid was transferred into the E. coli. Salmonella रूप extract कर देला तमे antibiotic resistance gene टा and ताकू पुणे transfer कर देला into the E. coli. ठीक है,
As a result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. Expressed and multiplied in E. coli. ठीक है, तापर कौन हला? तो हमें हमरो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके ताकू ट्रांसफर कर देले इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, एंड ए एक्सपेरिमेंट प्रथमे किए करथिले हर्बर्ट स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर करथिले. ठीक अछि, कोउटु आनिले सैंपल टी ना साल्मोनेला टू आनिले, का भीतर छाडिले ना इकोलाई भीतर छाडिले. इकोलाई रे कोन होची? यस, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन को लाई इकोलाई से सही रेजिस्टेंस जीन रो प्रॉपर्टी टाकू नेक्स्ट जनरेशन को प्रोपागेट करी करी चल. इन दैट वे आमर जो प्रोसेस टी अच्छी, ठीक अछि, आमर जो मेथड टी अच्छी वो यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल. बुझ पालो रे? ठीक है, तो टिल हियर आमर प्रिंसिपल्स पार्ट सॉरी होला. Till here we have finished the principal part of your particular chapter. ठीक है, इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे? टूल्स में जाएंगे. फाइन. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पाखरे एनसीईआरटी वाली बुक को ना रख के बैठो. कीप इट विथ यू whenever and as we are proceeding along the chapter, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को भी खोल के रखिए, so that whenever you are listening to what is being said here, आप अपनी एनसीईआरटी को भी सामने रेफर कर सकते हो. बुझला? जो जो लाइन रे तमर डाउट आसीबो बा बुझी न पारिबो, इमीडिएटली उस चीज को पूछ लीजिए. फर्स्ट थिंग. फाइन. Why? Because ultimately this is a fact that your questions in the NEET examination will be coming from your NCERT. यदि NCERT रू ही पढ़िबो तो NCERT किताब को सामने रखो. बुझ पालो? That will be beneficial to you. Clear? ठीक है. तो सिद्धि भाई, do not be reluctant to follow your NCERT, because ultimately तुम्हारा questions will come from NCERT. ठीक है, आगे बढ़ते. What are the various tools that are involved in the recombinant DNA technology? तो सबसे पहले the first category of tools which you will observe is our जो step पढ़ते. If you remember the steps that you studied or the principles that you studied, प्रथमे identify करिबा and extract करिबा. Yes. दूसरा उसे ट्रांसफर करेंगे by a suitable host into the desired suitable vector into a desirable host. ठीक है. And third, ताकि वो suitable environment दबा grow and mature होगा पाई and reproduce. ठीक है, ये बेसिक 3 स्टेप है. तो यहाँ देखो क्या टूल्स हमने यूज किया. फर्स्ट टूल दैट यू सी, जेहेतु हमें एक्सट्रैक्शन को था पूछे, तो पहला हो गया मॉलिक्यूलर